करेक्ट. क्योंकि मैं उनकी बेटी के साथ चिल करती थी तो कई बार मैं उनके घर जाती थी जब आई यूज्ड टू सी every couch, every surface was filled with books. हाँ. बैठने की जगह नहीं थी कि बैठना तो आप फर्श पे बैठ जाओ. हाँ. It was the strangest house I'd ever seen. And उस टाइम पे मैं उनसे बातें करती थी क्योंकि तब मैं थिएटर करती थी. हाँ. तो मैं उनसे उसके बारे में बताती थी. Okay. तो एक बार जब आप साथ में थे उन्होंने आपको बताया था कि there's this girl and he knew I'm a huge fan. हाँ. और मेरी मम्मा से आपकी बात हुई. और आपने मराठी में बात करी. और आज जब मैं निकल रही थी ना घर से, my mama was very confident कि नाही त्यांना लक्षात असेल. He knows I have spoken to him. He kept saying आपण भेटू and then he didn't भेटू. So my mom is very confident that you all are friends. No, but tell your mom that I don't remember this particular incident. But I'm sure this has happened because I was very fond of Limay sir and he's a lovely guy. Yeah. Actually, I was telling you मैंने क्यों सीखा मराठी फर्स्ट बिकॉज एक दिन एट द एज ऑफ 40 और 42 और समथिंग आई रियलाइज कि यार मुझे अपनी स्टेट की भाषा नहीं आती. समझता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ. तो ये बहुत शर्म की बात है. आई डिडंट लाइक इट व्हेन आई रियलाइज्ड इट. स्कूल में थे तो आई डू नॉट लाइक टू स्टडी. तो मराठी वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट. तो मैं फेल होता था और इतना ध्यान था नहीं मेरा. और मेरी बिल्डिंग में जितने लोग थे वो सब अलग अलग स्टेट्स से थे. इट वाज अ कॉस्मोपॉलिटन बिल्डिंग. तो मराठी वाज नॉट स्पोकन इन द बिल्डिंग. यू नेवर हैड मराठी फ्रेंड? आई हैड, बट इट वाज नॉट अ मराठी स्पीकिंग ग्रुप. तो वो कभी चढ़ी नहीं मेरे जबान पे. सो आई फेल्ट आई मस्ट लर्न एंड दैट्स आई कॉल्ड अप लिमय सर. आई कॉल्ड अप अतुल कुलकर्णी. मैंने बोला यार मुझे अच्छा. सो अतुल टोल्ड मी हिज नेम. देन किरण, मी, जुनैद एंड आयरा, हम चारों ने स्टार्ट किया सीखना. हाँ, क्योंकि मैंने स्पीक फ्लुएंटली ना. फ्लुएंटली तो नहीं पर पूरी मतलब बोल तो लेते हो. बोलू शकतो मी पण नॉट फ्लुएंटली. आणि कधी कधी मी आय गेट स्टक फॉर द राइट वर्ड. या आई कैन कम्युनिकेट नाउ इन मराठी. फर्स्ट 2 सेशन में बच्चे थे क्योंकि मैंने उनको बहुत समझाया कि मैं बोला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न. 2-3 सेशन उन्होंने किए फिर उन्होंने छोड़ दिया. किरण वाज देयर फॉर 6 सेशंस. फिर मैं अकेला था. बट यू फिनिश्ड. फिनिश मतलब हमारा फिनिश कभी हुआ नहीं. इट वाज अ प्रोसेस. और वो इसलिए क्योंकि हम लोग मराठी सीखते सीखते, लिमय सर इज सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन that he used to talk about Mahabharata. He would talk about Bhas, who's a very is a playwright from 2000 years ago. Oh. Yeah. So we used to discuss literature, we used to discuss history, geography, every topic under the sun. हम लोग हर चीजों के बारे में बात करते थे. मराठी इतना नहीं सीखते थे हम लोग. But having said that, no. speak very well then. I speak all right, yeah. Now coming to. But say hi to your mom. I will. And नक्की भेटूया. She'll be like, this is what you said the last time. No, but for sure. Thank you. That's very sweet. Coming to you, I mean, honestly, I've been and I'm not just saying this, but I've been a fan. I have watched a lot of your films over and over and over and I've enjoyed all of them. One of the things, and I'll tell you where this is coming from. अभी ना पिछले हफ्ते हम एक सिने प्ले शूट कर रहे थे. सेट इन द 90s. इट्स अ कॉमेडी. सो इट्स अ रियली फन प्लेस. तो वहाँ पे वी हैड टू डू आवर रिसर्च बिकॉज वी आर प्लेइंग दीज पीपल कि उस टाइम पे जैसे बात होती थी, उस टाइम पे जैसे फिल्म होते थे वैसे करना है ना. नन ऑफ अस have worked then. Right. लेकिन तब वैसे करना था. So many references came from अंदाज़ अपना अपना. So many references of performance came from हम है राई प्यार के, came from दिल है कि मानता नहीं. All these places. And then I got to thinking जब ये बात होने वाली थी, I said, I want to ask you, how have you been able to adapt to the kind of performances that worked at that time? So your question is, how do I keep up with the times? Yeah, how do you keep up with, like, performance-wise? I don't think it's got to do with the times. Okay. It's got to do with the characters. I'm not trying to, जब मैं अंदाज़ा अपना कर रहा हूँ, I'm not trying to be relevant to that time. Time का तो मैं सोच नहीं रहा हूँ और ना मैं audience को सोच रहा हूँ, to be quite honest. Really? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये किरदार actually कैसे होना चाहिए. I'm trying to be honest to what I'm supposed to do at that time. तो फिर अगर अंदाज़ा अपना अब बन रही होती, वैसे ही करता मैं. Really? हाँ, वैसे ही करता मैं. Unless अभी 30 साल के बाद मैं शायद मेरा टेक अलग होता, बट मेरा एटीट्यूड ऑफ अप्रोच सेम होता है. मैं ये नहीं सोचता कि आज की ऑडियंस कैसे लाइक करेगी. माई अटेम्प्ट वुड बी टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, नॉट व्हाट द ऑडियंस वुड रिक्वायर मी टू डू. डज दैट आल्सो हैव विद द फैक्ट दैट you grew over the years and your outlook towards life and how you perceived characters changed? No, I never think of this. Am I being relevant to performing at this time? So my performance should be for this audience of today's generation. Which is very वो सोच मुझे कभी नहीं आती. अगर आप honesty से किरदार को निभाते हैं उस वक्त, तो वो जब भी आप देखें it should be relevant. आप 100 साल बाद भी देखें it should be relevant. हम जब आज मुगले आजम देखते हैं और ऐसी प्यासा today, it's 50 years after those films were made, but they are all very relevant. The performances are ringing true. You see Dilip Kumar's performance, see Madhubala's performance in
मुगल आजम. Which is It crazy, is applicable to today's audience also. आज की audience भी देख के पसंद करेगी. So I think you have to be honest to the character. True, which is crazy क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि how is he this chameleon who just kind of keeps shape shifting over the time. Most actors around the decades usually fall into a particular mold or a particular image. Like Shatrughan Sinha has a certain image, Vinod Khanna has a certain image, Rajesh Khanna has a certain image. They do certain kinds of roles. Their characters are in a certain zone. That is their strength. So they play to their strength and they enjoy doing that, and even audiences enjoy watching that. Like Salman, you want to watch Salman in a particular way. Yeah. I have not done that. I have stayed away from that. I don't have an image. Aamir Khan की film या Aamir Khan angry young man है या ऐसा है या lover boy, ऐसा कुछ नहीं. I have done all kinds of roles because I was not wanting to be in an image. एक दफा मैं कोई role करता हूँ या character करता हूँ तो फिर naturally I'll not get attracted to something similar. I've just done it. I'll get attracted to a different character quite naturally. And I've had the good opportunity of working with very talented directors, different directors. तो हर director अपनी vision लेके आता है, हर director अपना. So that is why each of my films are so different because each director has his own charp, of how they interpret the character. It's teamwork. So जो आप मुझे देखते हैं फिल्म में, it's not just me. It's how the writer has written it. It's how the director has directed me. It's the energy on the set with the. It's the collab. Yeah, so it happens. I don't know how to explain it. It's magic. It's great, and we're just. Well, it's really nice to hear that you're saying it's magic because I just. It is because it doesn't make sense. You can't put it in words. I was just trying to do what was required of me. So effortless. नहीं effortless नहीं. No, but without the thought, right? I mean, effort तो है ही, but it wasn't. क्योंकि I'm not a natural or a gifted actor. Why do you say that? I've worked with a lot of actors जो prepare नहीं करते या फॉर एग्जाम्पल हम लोग दंगल कर रहे थे. दंगल में 4 लड़कियां थी मेरे साथ, तो हम लोग हरियाणवी साथ में सीख रहे थे. मुझे 4 महीने लगे वो एक्सेंट को समझने में, उसको जबान पे लाने में. मुझे 4 महीने लगे. और जायरा जो थी और जो बाकी लड़कियां थी उनको आई थिंक जायरा को तो 2 हफ्ते में आ गया था और बाकी लड़कियों को भी जल्दी आ गया था. तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है. इट टेक्स मी time to rehearse and get accents and मैं इतना I'm not a born like Nasir and all these are born actors. कभी shot wrong दे ही नहीं सकते. मैं बहुत wrong shot देता हूँ. तो मुझे संभालना पड़ता है. I'm sorry. In the most pleasant way. हाँ. Isn't that also a little bit similar to how Lal is? Oh. Little bit. Actually, yeah, because Lal's character is very innocent. That is his core. Honest. You are very honest about what you just said. Yeah. He's very honest and he's very innocent. And actually, I'm fairly honest also. Not always, but fairly honest. Fairly is fine. We'll take it. And by and large, I'm honest. And I feel that there is a lot of innocence in me because I believe I'm an idealist. No, but I'll tell you this honestly, और मैं इसीलिए नहीं बोल रही क्योंकि आप यहाँ बैठे हो. But I had the pleasure of chilling with you for like a good 15-20 minutes and I couldn't stop listening to everything you had to say. Even when he was not talking, I couldn't stop looking at him. And I was just like, I want to see him be, you know what I mean? And it was very honest. Now you have spent all your life here. Now Lal Singh Chaddha again is a film की बचपन से शुरू होती है, goes through schooling, relationship with mom, goes on to Jenny there, Rupa here, और फिर it's Lal's story. How was yours? How was it for you in school? What was that like? Oh, my real life. Yeah. Oh, yeah. Actually, there are similarities. Now that you mention it, I'm very close to my mom. Yeah. Lal is very close to his mother. The biggest influence on Lal is his mother, and the biggest influence on me is your mama. Is Ammi. I grew up very close to her. Childhood was was by and large a very comfortable childhood with my parents and my family. We have a large family, cousins and all that. So a lot of people feel कि आप film industry से हो क्योंकि my father was a producer. And everyone assumes कि producer का बेटा है तो बहुत rich लोग होंगे. Film producers are considered rich. My father was not a good businessman. So he always lost money. हाँ, वो successful फिल्में बनाई लेकिन वो पैसे नहीं बनाए. तो we were always in debt for some reason. I mean my father. हमेशा एक फिल्म बनाई थी उन्होंने लॉकेट फिल्म कुछ 8 साल लगे बनने में. तो उनका पैसा बहुत अटक गया था. He had taken a lot of loans and that time
it used to be 36% interest. So ऐसी point आ गई थी हमारे life में कि we were almost like going to be like homeless. And I remember I was in St. Anne's school. जिस स्कूल में हम थे उसमें फीस बहुत कम थी. 6th स्टैंडर्ड में 6 रुपीज, 7th स्टैंडर्ड में 7 रुपीज, हाँ 8th स्टैंडर्ड में 8 रुपीज, 10th स्टैंडर्ड में 10 रुपीज. कभी कभी तो घर वाले खुश भी होते